In this lesson, we will discuss about coordinate transformations. That what are coordinate transformations? Just recall the definition of tensors from lesson 1. The tensors follow certain transformation rules, certain coordinate transformation rules. So in that context, we discuss here about coordinate transformations, and we will start from a very simple definition of coordinate transformations. Are two-dimensional coordinate transformations. A two-dimensional coordinate transformation is a mapping of the form this. T of uv is equal to x of uv comma y of uv. Means coordinate transformation just is just like a mapping. So the transformation T maps a set S in the UV plane to a set T of S in the XY plane, as you can see here. In UV plane, if this is the set S, then in XY plane, you will get an image of set S, that is T of S, another mapping T. ठीक है, और ये आपके पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस है. दिस idea can be extended to three dimensional system as well. So it is an example of coordinate transformation. If P has the coordinates 1, 2 in UV plane, then find the coordinates in XY plane if x is equals to u plus v and y is equals to 2u minus v. So its solution is P के coordinates आपके पास हैं. P of uv is equal to 1 2 in the uv plane. ठीक है, और under the transformation आपके पास क्या coordinates आते हैं ये आपने find करना है. तो so use the transformation x is equal to u plus v and y is equal to 2u minus v. So replacing the values of u and v in here, in x is equal to 1 plus 2 आपके पास 3 आ जाएगा, and y is equal to 2u minus v. तो यहाँ replace करेंगे u और v की values, तो आपके पास 0 आ जाएगा. So the new coordinates of p in the xy plane are 3 0. So under the transformation defined over here, this the point p which has the coordinates 1 2, now this point has the coordinates 3 0 in xy plane. Okay. So similarly, here is another example. Transform the line PQ where P has coordinates 1 minus 1 and Q has coordinates 0 1 from UV plane to XY plane. और coordinate transformation आपके पास है कि x is equal to u plus v है और y is equal to 2u minus v. So अगर आपने लाइन को ट्रांसफॉर्म करना है PQ लाइन को from one coordinate system to another coordinate system, तो आपने उसके end points को ट्रांसफॉर्म करना है, एंड पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट पॉइंट है आपके पास P, उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 माइनस 1, उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. P of uv is equal to 1 minus 1, तो P of xy, x is u plus v and y is 2u minus v. Replace the values of u and v here, so you will get the point P of xy 0 3. तो P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स इन XY प्लेन आपके पास 0 3 आ गए हैं. सिमिलरली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इन XY प्लेन. तो इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें जो आपको दी हुई है u प्लस वी टू यू माइनस वी. तो इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करें u और v की, जो Q के लिए वैल्यूज़ हैं, Q के u v कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा Q के न्यू कोऑर्डिनेट्स इन XY प्लेन आपके पास आ जाएंगे 1 माइनस 1. So you can say that the line PQ is transformed to a line joining P03 and Q1 minus 1 in XY plane. तो वही line जो 1 minus 1 और 0 1 पॉइंट को ज्वाइन कर रही थी इन UV प्लेन, अब वो XY प्लेन में शिफ्ट हो गई है. आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस लाइन को, और वो लाइन अब क्या है, किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है XY प्लेन में, 0 3 एंड 1 minus 1. ठीक है, this is a very basic idea of coordinate transformation. So here are some well-known transformations, and you can see the effect of these transformation over here, and we will discuss these transformation in the coming lecture.